की recordings. Okay, we are going to discuss William Henry Perkin. So, William Henry Perkin, this is the title of this passage, and the man who invented synthetic dyes. Definitely, this person has invented synthetic dyes. And the basic thing which I'm going to tell you that we are going to practice retaining information inside our mind. This is very important if you really want to improve your reading skills, especially when we talk about reading and listening skills, and you want to score 8.5 and 9 bands, so you need to work on this skill as well. Retaining information inside your mind is first you will visualize the information and then you will attempt the questions. Visualize means visualize and retain inside your mind. So William Henry Perkin was born March 12, 1838 in London, England. As a boy, Perkins' curiosity prompted early interest in art, science, photography and engineering. जी, विलियम हेनरी पर्किंग 1238 में पैदा हुआ। आपके पास जो बुक्स मौजूद हैं, encircle this word 1238, जहां जहां पे आपका प्रॉपर नाउन आएगा, जहां पे डेट आएगी, आपने उसको सर्कल कर लेना है। विलियम हेनरी पर्किन को सर्कल कर लें, 1838 को सर्कल कर लें, लंदन इंग्लैंड को सर्कल कर लें। तो शुरू में जब वो जवान था तो उसका इंटरेस्ट साइंस और आर्ट्स की तरफ, फोटोग्राफी इंजीनियरिंग की तरफ था, लेकिन बट इट वाज अ चांस स्टम्बलिंग अपॉन अ रन डाउन येट फंक्शनल, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ laboratory in his late grandfather's home that solidified young man's enthusiasm for chemistry. एक लेबोरेटरी थी जो उसके मरहूम दादा के घर में थी, जिसने उसके जोश व खरोश को मजबूत कर दिया केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे उमैर, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, जरा मुझे बताएं कि विलियम हेनरी पर्किंस की जो 1838 में पैदा हुआ था, वो केमिस्ट्री में उसने बेसिकली इंटरेस्ट लिया। आखिर में शुरू में Mhm. बचपन में तो दो तीन चीजों में था, उसके बाद केमिस्ट्री में हो गया। सिर्फ यहाँ पे उसके Mhm. इंटरेस्ट की बात की गई है, वो कहाँ पे पैदा हुआ था ये बात की गई है, और ये बात की गई है कि वो लंदन के अंदर था। ठीक है जी। उसके बाद Mhm. नेक्स्ट पैराग्राफ में आप आ जाए। Okay. जी दहादात, आर यू हेयरिंग मी? अच्छा उमैर, आप ना एक रजिस्टर खोल लें, उसके ऊपर लिखें पैराग्राफ 1, और पैराग्राफ 1 के सामने ना एक छोटा सा पॉइंट लिख लें कि विलियम हेनरी पर्किन बॉर्न 1838 और he was interested in chemistry because of his Wait, great father's laboratory. sir, wait a minute. मैं एक जो है ना रजिस्टर पकड़ लूं। रजिस्टर पकड़ लें, उस पर लिख लें ये पॉइंट्स, और ये भी लिखें कि ये उर्दू में बेशक लिखें, इंग्लिश में लिखें, बट यू हैव टू राइट इट डाउन। Yes, sir. What I have to write? जी, जो पैराग्राफ नंबर 1 में इंफॉर्मेशन दी है ना, P1 लिखिए, आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, उसको एक दो पॉइंट्स लिख लें कि व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, ये बताया गया कि वो कहाँ पैदा हुआ, और ये बताया गया Mhm. कि वो उसका जो फर्दर इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं। एज अ स्टूडेंट एट द सिटी लंदन स्कूल, परकिन बिकेम इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। इमर्स्ड कहते हैं, दो मीनिंग होते हैं। एक होता है सोक्ड इन, यानी कि किसी चीज को पानी में, लिक्विड में भिगो देना, डुबो देना, दैट इज इमर्स्ड। दूसरा इमर्स्ड का मतलब है कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन समथिंग, बहुत मुबतला हो जाना, Interest. काफी इन मार्क से कोई काम करना शुरू कर देना, डूब जाना, इन अ सेंस के students are immersed into study, इस तरह करके हम we will make this sentence. So as a student at the City London School, Perkin became immersed in the study of chemistry. Perkin chemistry की study में basically काफी ये समझ लें कि he was uh, मुब्तला हो गया, he was studying with the devotion, or his talent and devotion to the subject were perceived by his teacher Thomas Hall. Thomas Hall को सर्कल करें। उसका जो हो टीचर था गया। बेसिकली, उसने पहचान लिया कि ये सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट लेगा। और उस टीचर का क्या नाम था? थॉमस हॉल।
who was encouraging him to attend a series of lectures given by the eminent scientist Michael Faraday. उसने कहा कि वो माइकल फैराडे की जाके लेक्चर्स लो, बड़ा जबरदस्त साइंटिस्ट है। उसके टीचर थॉमस हॉल ने उसे माइकल फैराडे के लेक्चर लेने को कहा। ठीक है जी। और उसने ये कहा Mhm. कि एट द रॉयल इंस्टीट्यूट में जाके आपने लेक्चर लेने हैं। दो स्पीचेस फायर्ड द यंग केमिस्ट enthusiasm further। वो जो तकरीरें थी उसने उसको और भड़का दिया, उसके जोश और खरोश को। एंड ही लेटर वेंट ऑन टू अटेंड द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, बाद में रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री को अटेंड करने चला गया, विच ही सक्सीडेड इन एंटरिंग 1853 एट द एज ऑफ 15। और 15 साल की उम्र में उसे कामयाबी मिली कि वो कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में 1853 के अंदर उसने उसमें दाखिला ले लिया। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि वो पैदा कहाँ पे हुआ, फिर उसका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में Mhm. था, उसकी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट को Mhm. पहचान लिया उसके टीचर ने, और उसके टीचर ने कहा कि जाके तुम लेक्चर माइकल फैराडे के। और आफ्टर दिस आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर उसने उसका जो खरोश जो सा था इट वाज इंक्रीज। एंड आफ्टर दिस व्हाट हैपन, 1853 को सर्कल कर लें कि ही गॉट एडमिशन एट द एज ऑफ 15 इन रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी। ये हमारी ऊपर से नीचे यूनिवर्स पूरी कॉल। Ali Hassan, there is one activity which we are doing right now in reading, that is retaining information inside our mind. We will not attempt a question, but when we will attempt, we will not read the text. This is what we are going to do. So I'm saying you just read with me, but completely think about, fully focused on the text and retaining information. Time and again, I will ask you that what we have read up till now, and you will tell me that these are the things in sequence we have read, right? Dear listen. السلام عليكم. Walaikum assalam. Are you hearing me? Okay, fine. Properly, but now I am catching someone, but I'm not catching all. No, but first, I mean, right now my voice is clear. Dear listen, please tell me that my voice is clear. Are you catching me? Listen, something went wrong there. Otherwise, other here students in Pakistan they can easily understanding me. Just keep on listening, inshallah, and then we'll discuss rest of the things. Actually, at the time of Perkins' enrollment, the Royal College of Chemistry was headed Now, by. now I'm Okay, fine. What the hell? Actually, at the time of Perkins' enrollment, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German William August Hoffman. जी, जब पर्किन ने 1853 में वहां पर एडमिशन लिया तो द कॉलेज वाज हेडेड, कॉलेज का जो प्रिंसिपल था हिज नेम वाज William Hoffman, right? So encircle this word William Hoffman, Royal College of Chemistry. Both of the words you need to encircle. And Perkin's scientific gift soon caught by Hoffman's attention, and within 2 years he became Hoffman's youngest assistant. So Perkin was very intelligent that Hoffman thought, okay, Hoffman, what he did, he was considered him as a youngest assistant. Not long after, Hoffman principal ने उसको अपना assistant बना लिया. Not long after that, Perkin made the scientist breakthrough that would bring him fame and fortune. जी, इससे ज्यादा दूर की बात नहीं कि पर्किन ने क्या किया, साइंटिफिक उसके साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ने उसको अमीर और मशहूरी दी। फेम मीन खुशकिस्मती, फॉर्चून पैसे के हिसाब से, यानी कि बोथ ही वाज फेमस एंड गॉट एंड बिकेम रिच ओनली बिकॉज ऑफ हिज साइंटिफिक इन्वेंशन। एट द टाइम, वो वक्त, quinine was the only viable medical treatment for malaria.
कुनीन उस वक्त एक viable treatment था मलेरिया का. The drug is derived from the bark of cinchona tree, native to South America. वो जो दरख्त था. सर आपकी आवाज में प्रॉब्लम सर सर समथिंग वेंट रॉन्ग विद योर Now tell me that it is clear. बेहतर हुई है. एक्सक्यूज मी सर समथिंग वेंट रॉन्ग विद योर वॉइस Okay, now tell me that it is clear or still there is. नाउ Okay, 1 minute. Let me check it out. सर आपकी आवाज समटाइम बीच में क्लियर नहीं आ रही Sometimes it's clear, but you know, sometimes we miss your voice. yeah at times Okay, let me change my mic first and then I will talk to you. ओके सर जी, now I'm audible, Mer. yes sir Acha ji, whatever we have discussed, I'm going to tell you once again. Perkin was a person. Yes, now it's okay. Okay, fine. Eliason Perkin, born in 1838, he was interested in chemistry, and this thing was perceived first time by his teacher. And after this, he told to take some lectures of one of the eminent scientists, Michael Faraday. He took some lectures of Michael Faraday, and his speeches fired basically enthusiasm further in the young chemist. And later on, he got admission in 1853 in Royal College of Chemistry, right? So at that time, his age was only 15. After this, there was a person, William Hoffman. He was the principal of that college. What happened? He uh, he got he got his Hoffman actually caught the attention, and he perceived that the young man William Henry Perkin is one of the learned and intelligent person. So Hoffman he made him his assistant. William Hoffman actually made Perkin his assistant, and not long after that, in short time, he will become because of his scientific breakthrough, he became rich and famous both. So this is what we have discussed up till now. Now we are going to read next paragraph, right? Okay. So it is written here that at the same time, at the time in those days, quinine was the only viable treatment for malaria, and the drug is derived from the bark of the cinchona tree. You can see this. Native to South America. By 1856, demand for the drug was surpassing the available supply. Thus, when Hoffman made some passing comments about desirability of synthetic substitute quinine, it was unsurprising that this star pupil was moved up to take up the challenge. So what happened actually, Hoffman said that there is only one thing, that is quinine, right, which is the possible um, treatment of malaria. So is somebody there who will prepare, who will try to make a substitute of quinine? So the challenge was accepted by the Perkin. He accepted that challenge. In 1856, demand was arose of that drug basically, and the drug in those days was derived from cinchona tree, and that is native to South America. The first time
The origin of that tree is was South America. Okay, next thing is during his vacation in 1856, Perkins spent his time in the laboratory on the top floor of the family's house. 1856, he was spending time in his grandfather's laboratory. He was attempting to manufacture quinine from aniline. So 1856 circle and an inexpensive and readily available coal tar waste product. जी एनालाइन जो था उसने उससे बनाने की कोशिश की और ये जो एनालाइन था वो एक सस्ता था और readily available coal tar based product. Despite his best efforts, however, he did not end up with quinine. बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो quinine के साथ end up नहीं कर सका, ना बना सका. Instead, he produced a mysterious dark sludge and he produced a dark sludge. Luckily, Perkins' scientific training and nature prompted him to investigate the substance further. So luckily, what happened that his scientific training and nature, he further his experiments, and what happened in incorporating potassium dichromate and alcohol into an aniline at various stages of the experimental process, he finally produced a deep purple solution. So by using these chemicals, what happened? He invented deep purple solution and providing the truth of famous scientist Louis Pasteur. G. Louis Pasteur, who was that chance favors only prepared mind. Just read this paragraph. I'm giving you 1 minute and then we will moving ahead, but you will tell me that what is being discussed in this paragraph, right? Let me take one phone call. जी, उमर मुझे जो अभी तक हुआ यहाँ तक मुझे समरी बताएं जरा फटाफट स्पीड से इन उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज व्हाटएवर जो फर्स्ट से स्टार्ट तक लास्ट तक हुआ। जी यहाँ तक 17 तक सर एट द स्टार्ट तो उसने बताया हुआ कि वो पहले पैराग्राफ में क्या लंदन, हाँ फर्स्ट यस पैराग्राफ सर, में क्या बताया हुआ जी यस शुरू यस, एट द फर्स्ट हाँ बता एट द फर्स्ट पैराग्राफ उसने बताया हुआ है कि वो लंदन में जिनके पैदा हुआ, ठीक है, ही वाज बोर्न इन लंदन इंग्लैंड एज अ बॉय, और उसने इंटरेस्ट लिया आर्ट्स साइंसेस फोटोग्राफी एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। फिर
फिर उसने जो ना अपने ग्रैंडफादर के होम में उसको जो ना एक लेबोरेटरी में जो ना उसकी जो ना कुछ देखा तो उससे जो ना उसकी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ी, ठीक है। और फिर जो ना सिटी ऑफ लंदन के अंदर जो उसने जो ना वो केमिस्ट्री के अंदर जो ना इसके उस जो उसको एंथुसिज्म मिला है ना अपने ग्रैंडफादर के जो ना एक टीचर होम में उसने उसने कहा कि जी आप जाके एक और बंदा है माइकल फैराडे, उसके जाके लेक्चर लें, और उसके हाँ लेक्चर उसके बाद उसके बाद बाद उसका शौक और बढ़ गया। जी उसका शौक और बढ़ गया और उसने जो ना रॉयल चैलेंज कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में जो ना इन 1853 15 की एज में जो ना इसके केमिस्ट्री में सक्सेस हासिल की, ठीक है। और अपने एनरोल Fine. Ali Hassan, you will tell me that when he got admission in Royal College of Chemistry in 1853, after this, what happened? After that, he became assistant of this one of William Hoffman. William Hoffman. Okay, and he was the youngest. Yeah, Fine. So, what challenge he gave him? yes, William Hoffman. Okay, uh, at that time, uh, with what I didn't understand what you said. What challenge Hoffman gave to his assistant? He said, try to make. The challenge he gave to his assistant that to make this is a quinine, okay. Okay. This one he gave him a laboratory Okay. to attempt trying to attempt this one uh, in his family's house, okay, and in an expensive and readily available coal tar. Very nice. So, can you tell me that one more thing? Umair, आप मुझे बताएं. How to He was successful in making quinine. what you said? Was he successful in making quinine? Yes. quinine बना ली थी उसने? quinine का जो बेसिकली सब्स्टिट्यूट था बना लिया था उसने? No, sir. इधर लिखा हुआ है at the third paragraph, despite his best efforts, however, he did not end up with quinine. ठीक है, नहीं नहीं बनाया था, गुड हो गया। उसके बाद ये हुआ कि 1856 में उसने अपने वो डिफरेंट केमिकल्स के साथ उसने काम किया और एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन उसने प्रोड्यूस कर लिया ना। हम्म और luckily Perkins' scientific training and nature prompted in अच्छा जी what happened, he finally produced a purple solution and providing the truth। और एक quotation है उसका वो मिसदाक बना। The quotation is chance favors only the prepared mind। लुईस पास्चर ने एक दफा ये कहा था, ये लुईस पास्चर को भी सर्कल कर लें कि चांस कर लिए उसी को मिलता है, बेसिकली उसी को वो चांस हेल्प करता है कि जो उसके लिए पहले से रेडी हो। Perkins saw the रेडियो potential of this unexpected find, ठीक है ना, और उसने ये देखा कि इसका बेसिकली पोटेंशियल था। जहांदार आप भी मौजूद हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं? यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। Sir, I am listening you carefully. Unfortunately, I don't have the book, but I am looking at the screen and getting each and everything. Okay, thank you so much. This is what I want, because in the end, what we are going to do, we will not read the text again, but we will try to attempt all the questions. And I hope so that you will. Yes, sorry, sir, to interrupt you. Kindly give me the access so that I may download those books. Okay, I got your email. I just read, but after this session, I will give you the access. Okay, sir. अच्छा जी, हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे टेक्सटाइल डाइज वर मेड फ्रॉम सच नेचुरल सोर्सेज एज प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीशंस
Some of these, such as glandular mucus of snails, were difficult to obtain and outrageously expensive. जी पहले अगर हम उसकी बात करें कि जो ये याद रखें जो पहला जुमला होता है ना वो हमें बताता है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इसमें सेंट्रल आइडिया ये है कि पुराने ज़माने में टेक्सटाइल डाइज वाज मेड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल एक्सक्रीशन, जानवरों से निकाली जाती थी, और जो पर्पल कलर था वो स्नेल्स के म्यूकस से निकाला जाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता था। Indeed, the purple color extracted from snail was once so costly that in a society at the time only the rich could afford. अब ये रिच के साथ जब द आर्टिकल लगे ना, इट मींस पूरे के पूरे रिच। अगर खाली रिच होगा तो कोई एक रिच की बात है, लेकिन जब आएगा ना द रिच, द पुअर, उसका मतलब है सारे। उसने कहा कि वो इट वाज एक्सपेंसिव इन अ वे दैट ओनली द रिच कुड अफोर्ड दिस, एंड फर्दर नेचुरल डाइज टेंडेड टू बी मडी इन ह्यू एंड फेड क्विकली। और वो जो उससे निकलता भी था स्नेल से, वो होता ये था कि बड़ी जल्दी गदला हो जाता था और फेड हो जाता था। It was against his backdrop that Perkins' discovery was made. ये उसके पीछे के हालात बताए जा रहे हैं कि जो पर्किन की ने डिस्कवरी की थी। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। पर्किन quickly grasped at his purple solution could be used to color fabric, thus making it world's first synthetic dye, realizing अच्छा यहाँ पे ना हमें राइटिंग भी हमने ठीक करनी है ना। तो देखें, पर्किंग ने फौरी तौर पे देखा कि उसका पर्पल सॉल्यूशन कुड बी यूज्ड और चुनाचे दस, इसीलिए मेकिंग इट फर्दर फर्स्ट सिंथेटिक डाई, और दुनिया का सबसे पहला सिंथेटिक डाई बन गया। Realizing the importance of his breakthrough, he lost no time in patenting it. उसने ज्यादा टाइम नहीं इसको अंडरस्टैंड करते हुए वेस्ट किया, बट perhaps the most fascinating of all Birkin's reactions to this it was his nearly instant recognition that new dye had a commercial possibilities. तो कमर्शियल पॉसिबिलिटीज जो सी है ना, उसने ये परसीव कर लिया बहुत जल्दी कि मैं इसको बेच के अमीर हो सकता हूँ। परकिन Perkin originally named his dye Tyrrhine Purple, but it later became commonly known as mauve. शुरू-शुरू में उसका नाम टायराइन पर्पल था, लेकिन बाद में उसका नाम माउव के नाम से मशहूर हुआ। फ्रॉम द फ्रेंच फॉर द प्लांट यूज्ड टू मेक द कलर वॉयलेट। फ्रेंच में एक प्लांट होता था उस वो जो कि वॉयलेट कलर बनाने से के लिए यूज होता था, माउव उसके नाम से। He asked advice of Scottish dye works owner रॉबर्ट पुलर। उसने एक मशवरा लिया रॉबर्ट पुलर से। अब ये रॉबर्ट पुलर, थॉमस हॉल, विलियम हॉफमैन, परकिन, ये सारे नाम ना आपके जेहन में होने चाहिए, और आपको पता भी होना चाहिए कि किस पैराग्राफ में कौन सी डिस्कशन हुई है। अच्छा जी। Who assured him that manufacturing the dye would be well worth it, the color remained fast। अगर तो रंग तेज हुआ और तो उस वक्त फेड ना हुआ, तो उस वक्त ये होगा कि आपका जो कलर आप बनाएंगे उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मार्केट में उसकी अच्छी सेल होगी। एंड द कॉस्ट वाज रिलेटिवली लो, और कॉस्ट भी कम थी। सो ओवर द furious objection of his mentor हॉफमैन। अब हॉफमैन ने कहा था कि जी मैं तो तुम्हें कुनीन बनाने के लिए कह रहा था और तुम किस चक्कर में पड़ गए। काफी ज्यादा उसने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए। ही लेफ्ट कॉलेज टू गिव बर्थ टू द मॉडर्न केमिकल इंडस्ट्री। उसने कॉलेज ही छोड़ दिया, और कॉलेज छोड़ने के बाद एक इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दी। जी, विद द हेल्प ऑफ हिज फादर एंड ब्रदर, अपने बाप और भाई की मदद से, परकिन सेट अप अ फैक्ट्री नॉट फार फ्रॉम लंदन। उसने एक फैक्ट्री बनाई जो लंदन से बहुत दूर नहीं थी। यूटिलाइजिंग द चीप एंड प्लेंटीफुल कोल tar that was almost unlimited byproduct of London's gas street lightning। कोल tar बहुत सस्ता होता था लंदन के अंदर, तो वो उसने इकट्ठा किया। द डाई works began producing the world's first synthetic dyed material in 1857। 1857 में पहला डाई मटेरियल बनाया, उसने इंडस्ट्री लगा ली। और विलियम हॉफमैन ने उस पर तबसरा किया कि ये तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन उसने कॉलेज ही छोड़ दिया और इंडस्ट्री लगा ली। और उसने मशवरा भी किया रॉबर्ट पुलर से। रॉबर्ट पुलर एक बंदा था जो कि बेसिकली कलर्स वगैरह बनाता था। उसने ये कहा कि जी अगर तो आपका कलर फास्ट होगा, तेज होगा, तो फिर ये बहुत ज्यादा बिकेगा। ठीक है, ये हमारे पीछे से। और उससे बैकड्रॉप में ये था कि एनिमल के एक्सक्रीशन से निकलता था, और जो पर्पल कलर था वो स्नेल के ग्लैंडर
म्यूकस से निकलता था, जो कि बहुत महंगा था और सिर्फ रिच अफोर्ड कर सकते थे। अब ये कहानी आगे बढ़ रही है। द कंपनी रिसीव्ड कमर्शियली बूस्ट फ्रॉम द एम्प्रेस ऑफ फ्रांस। तो जो वहाँ की एम्प्रेस थी उससे कंपनी को बूस्ट मिला। व्हेन शी डिसाइडेड द न्यू कलर फ्लैटर्ड हर, very soon mauve was the necessary shade for all the fashionable ladies in the country. जब उसने वो कहा कि माउ कलर बहुत अच्छा है तो बेसिकली क्या हुआ, उसको अच्छा लगा और उसके बाद वो जितनी भी खवातीन थी मुल्क के अंदर फैशनेबल, उन्होंने माउव पहनना शुरू कर दिया। नॉट टू बी आउटडन, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया आल्सो अपीयर्ड इन पब्लिक वियरिंग माउ गाउन। इंग्लैंड की जो क्वीन थी उसने भी माउ कलर का गाउन पहना। पहले फ्रांस की बात हुई, बाद में इंग्लैंड की क्वीन की बात हुई। thus making it all rage in England as well। तो लहर एक इंग्लैंड के अंदर भी उभर उठी। The dive was bold and fast and the public clamored for more। Perkin went back to the drawing board और पर्किन ड्राइंग बोर्ड में वापस चला गया। उसके बाद क्या हुआ? Although Perkin's fame was achieved and fortune assured by his first discovery, the chemist continued his research. Among other dyes developed and introduced were aniline red 1859 के अंदर, 1857 से 59 के अंदर एनालाइन रेड उसने एक और इजाद कर दिया उसके बाद, और उसके बाद एनालाइन ब्लैक किया 1863 में। फिर लेट में 1860 के अंदर Perkins Green आ गया। It is important to note that Perkins' synthetic dye discoveries had outcomes far beyond merely decorative. The dyes became vital to medical research in many ways। उसने कहा कि ये भी आप अपने पास ज़हन में रखें कि वो सिर्फ कपड़ों को रंगने के लिए नहीं बल्कि मेडिकल में भी इस्तेमाल होती थी। मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस दे वर यूज्ड टू स्टेन प्रीवियसली इनविजिबल माइक्रोब्स। जी, पहले ऐसे माइक्रोब्स जो देखे नहीं जा सकते थे उनके ऊपर ये जो उनसे निशान लग जाते हैं वो नजर आते हैं। एंड बैक्टीरिया allowing research to identify such pests tuberculosis cholera। और ये वो बीमारियां हैं जिसकी वजह के बाद में सामने आई आफ्टर दिस डाई। जब ये डाई बनाया तो उसके बाद ये पता लगा कि अच्छा ये भी इन माइक्रोब्स की वजह से होती है। वो माइक्रोब्स इन कलर्स की वजह से सामने आना शुरू हो गए। आर्टिफिशियल डाइज कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल टुडे। आज भी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आर्टिफिशियल डाइज रंग जोन से। एंड इन व्हाट वुड हैव बीन पर्टिकुलरली प्लीजिंग टू परकिन, और जो मेन चीज जिससे परकिन की रूह जोन सी है वो खुश हो जाएगी वो क्या है? दे करंट यूज इन द सर्च फॉर वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया। कि वो मलेरिया के के लिए अब इस जो वैक्सीन है उसके अंदर उसका इस्तेमाल जो सा इन द सर्च फॉर अ वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया वहां पे हो रहा है। जी समझ आ गई उमर साहब? एंड जहां दाद एंड अरीस एंड एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट हमने विजुलाइज किया, उसको पढ़ा, उसको समझा, उसको अपनी आंखों के सामने लेके आए। एंड इन देन आई मीन वी नीड टू रिटेन इंफॉर्मेशन इनसाइड आवर माइंड। So we know what is written in paragraph 1, paragraph 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up till now। तो मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ एक summary जल्दी से। You should keep this thing inside your mind कि सबसे पहले पैराग्राफ में बताया कि विलियम हेनरी पर्किन कब पैदा हुआ। उसके बाद शुरू में उसका इंटरेस्ट क्या था, बाद में उसका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में डेवलप हुआ। केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट जो सा था उसके टीचर ने परसीव किया। टीचर ने कहा कि जी आप जाके जो एक और साइंटिस्ट है विलियम नहीं विलियम हॉफमैन, टीचर ने कहा कि जी आप उसकी जाके स्पीचेस सुने। वो उसकी स्पीचेस ने उसके अंदर जज्बा जज्बा बढ़ा दिया। उसके बाद उसने रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में दाखिला लिया। रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में जब दाखिला लिया तो उसकी उम्र उस वक्त 15 साल थी। और उसके बाद ये हुआ कि वहां पे विलियम हॉफमैन था। विलियम हॉफमैन ने देखा कि इंटेलिजेंट लड़का है, उसने उसको अपना शागिर्द बना लिया और शागिर्द को कहा कि जी ये क्विनीन का सब्स्टिट्यूट तैयार करो। सब्स्टिट्यूट तैयार करते करते उसने क्या किया कि एक पर्पल कलर कलर को इजाद कर लिया। उस वक्त क्विनीन जो सा था वो एक सिंचोना ट्री में से निकाला जाता था जो जो कि एक वाइबल, इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं था। फिर क्या हुआ कि वो पर्पल कलर जो सा रॉबर्ट पुलर ने कहा जिसकी कमर्शियल पॉसिबिलिटीज हैं अगर ये कलर जो सा फास्ट हुआ। फिर उन्होंने एक इंडस्ट्री लगा ली। इंडस्ट्री लगाई उसके बाद फ्रांस की जो सी एम्प्रेस थी उसने उसको फ्लैटर्ड मतलब हुई, उससे खुश हुई। और उसके बाद जितनी भी फैशनेबल लेडीज थी अमीर
खवातीन थी, उनका वो सिंबल बन गया। और उसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं हुई। क्वीन क्वीन जो सी थी इंग्लैंड की, उसने भी वो कलर पहना, और उसके कलर के पहनने के बाद वो जो सा ना आम हो गया। उसके बाद उसने अपनी रिसर्च जारी रखी, और पर्किन ग्रीन और एनालाइन ब्लैक और इस तरह के दो तीन कलर्स और भी उसने इजाद किए। और उसके बाद ये हुआ कि वो ये जो उसके कलर्स इजाद करने थे वो सिर्फ फेम ऑफ फॉर्चून तो बने, लेकिन उसके अलावा वो आजकल मेडिकल साइंसेज में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे माइक्रोब्स जो पहले नजर नहीं आते थे, अब उनको देखा जा सकता है इन कलर्स की इजाद के बाद। और उससे ट्यूबरक्लोसिस, ये 3-4 बीमारियां जो बताई गई हैं, उनका जो सा इलाज मुमकिन हुआ। और मजे की बात ये है कि आजकल वही मलेरिया जिसकी बात की थी विलियम हॉफमैन ने, उसकी वैक्सीनेशन के लिए भी, उसकी तलाश में भी ये डाइज जो हैं वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, कोई कहानी आगे सामने। नाउ कम बैक। ठीक है जी, first 7 question, every one of you will write down on paper. इन questions को पढ़ें, write down the answers and then share with me that this is true, false, not given or whatever. I'm giving you 3 minutes to write down the answers. Hello, the voice has gone. I think G, what are you saying? Ali Hassan, please speak. I'm saying that attempt these 7 questions. I don't know if something is going on. Ali Hassan, I'm saying attempt these 7 questions. G. Ali Hassan, attempt these 7 questions. Jumair, are you doing this? Yes, sir. Jandad, I have given access to you.
Listen, I'm not speaking, so this is the reason there is no sound. Okay, okay. I'm saying that attempt these 7 questions. Okay, first of all, Michael Faraday was the first person to recognize Perkins' ability as a student of chemistry. Yes, माइकल फैराडे ने पहचाना था सबसे पहले या उसके टीचर ने पहचाना था? उमर, you will tell me. इसका जवाब है फर्स्ट पैराग्राफ में. We will see first paragraph. Just read this and tell me what is the answer. Here, second paragraph. This one. What is the answer? May tell me what is the answer? Says false. It is false because Says false this is false. Michael Faraday suggested. because अच्छा, Michael Faraday it ने is written his talent and devotion to the subject. एग्जैक्टली माइकल फैराडे ने सजेस्ट किया, माइकल फैराडे ने उसको कहा कि परकिन आपको रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहिए. अब ये देखें, ये लाइन है और अगेन आंसर इज इन दिस पैराग्राफ. यस जहांदाद, यू विल टेल मी व्हाट इज द आंसर. जी मैं आप बताएं. Evet olsun. Sir, I think so is false. Hello? जी कैसे फॉल्स हो गया? At the time of Perkins' enrollment, the Royal College of Chemistry was headed with विलियम हॉफमैन ने नहीं था ये इसको सजेस्ट किया. विलियम हॉफमैन तो नहीं, ये तो माइकल फैराडे है ना. माइकल फैराडे ने सजेस्ट किया कि परकिन को चाहिए कि वो दाखिला ले रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में. ये कहाँ लिखा हुआ? इसका जवाब, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट्स आंसर इज हियर. Then it's not given फिर. जी इट इज नॉट गिवन. कोई उसने सजेस्ट नहीं किया. विलियम हॉफमैन तो बेसिकली उसका वो था. ठीक है समझ आ गई मुझे. और दूसरा सजेस्ट जो किया ही नहीं किसी माइकल ने. फैराडे है ना, उसने तो तकरीरें की थी. ही डिलीवर्ड द लेक्चर और उस लेक्चर से इंस्पायर हुआ था केमिस्ट्री के लिए, ना कि दाखिला कॉलेज में दाखिले के लिए. और ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं है कि उसको किसी ने सजेस्ट नहीं किया था. Perkin employed August William Hoffman as his assistant. Perkin ने Hoffman को सही. assistant बना लिया. It is false क्योंकि वो विलियम हॉफमैन ने उसको असिस्टेंट बनाया था. It is false again. William Hoffman made him assistant, not Perkin made him assistant.
और आई थिंक सो सर ये जो फोर्थ वन है, Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous. It is not given. एक सेकंड में देखो। हाँ बोले। सर ये जो ये फोर्थ वन है, Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous. इधर ये लास्ट पे आ जाए, not long after that Perkin made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune. इसमें कोई उसने ये नहीं उसकी इसके यंग होने का, यंगस्टर होने का मेंशन नहीं किया हो, तो ये नॉट गिवन है। मेंशन तो नहीं किया हुआ, बट देयर इज वन थिंग कि मुझे ये बताएं कि उसने It was इट वाज ट्रू। हाउ यू आर सेइंग दिस? Just see this. When he got admission, the age was 15. The age was, number four. I think it's this true. is true. Age was 15, and after Uh, this, he started work. yes, So just see yes, this. exactly, yes, In 1856, yes. so he spent time 1856 and 1838. So sir, तो young था ना? could we guess from अगर एज से भी हम, अगर उसने ये मेंशन ना किया हो हाँ, कि तो उन्होंने, एज ना मेंशन, this is देखिए मुझे रीडिंग में इस तरह की ही प्रॉब्लम्स आती है रीडिंग में मुझे। देखिए यहाँ पे उसने सिर्फ यंगस्टर का मेंशन नहीं किया, he भाई hasn't mentioned he is young or old or now any, listen to me. but he This mentioned is just nine age, band so we can fetch from age as well. Exactly, this is nine band answer. This part is called, From the age we can indicate. this is called inference, right? कि आपने फुल हम्म अंडरस्टैंडिंग से अपनी अकल से का मुजाहरा इस्तेमाल करते हुए आपने उसके सर पार्ट सर सर निकालना है, और ये जो for क्वेश्चन है ना, for ये नाइन बैंड for का है। for example, he has mentioned there are 35, then what we could do for it? फिर हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर से 35 लिखा होता, 35 मीन्स के एज उसकी 35 लिखी होती, तो यंग ही होना था ना यार, बूढ़ा तो नहीं होता 35 साल का बंदा। देन यंग 35 भी यंग ही होगा। यंग ही है ना, एग्जैक्टली। हाँ, तो इसको ना वो हम, तो मिडिल एज आ जाती है। तो बूढ़ा तो नहीं होता ना भाई। दूसरी बात ये है कि एक चीज आप याद रखें कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो इन्फ्रेंस से रिलेटेड होते हैं, और जो बंदा इसको अटेम्प्ट कर लेता है ना, तो समझे उसके 8.59 बैंड आएंगे। ये आपने तब हम्म, तक नहीं होते जब तक आप पूरे पैसेज को जैसा हमने माइंड में रिटेन रखा हुआ ना, इस तरह रिटेन नहीं रखेंगे, यू विल अनेबल टू अटेंड दीज क्वेश्चंस। आपसे ये ठीक नहीं होंगे। हम्म। अच्छा जी, परकिन होप्ड टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग फ्रॉम कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट। पहले 5 देखें। दरख्त के उगने की बातें कही हुई हैं कि दरख्त यहाँ पे उगता था। इधर उगता है उधर नहीं उगता, ये कोई डिस्कशन हुई है? नहीं, वी नॉट गिवन। दिस इज नॉट गिवन। और परकिन होप टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग फ्रॉम कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट, उसने कहा कि जी कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट से मैं एक ड्रग बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसा हुआ था, यही तो हुआ था कि कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट से उसने Yes, कहा था। true. ट्रू। This is true. Yes, Perkin was inspired by the discovery of famous scientist Louis Pasteur. लुईस पास्चर ने कोई डिस्कवरी नहीं की थी, उसने सिर्फ एक बात की थी कि चांस फेवर्स ओनली प्रिपेयर्ड माइंड। क्या कहा था? हम्म, ठीक है Yes. ना? उसने कोई डिस्कवरी नहीं की थी, उसने सिर्फ एक कोटेशन दी थी, और उसने ये कहा था कि परकिन जोनसा है वो मशहूर हो गया, लेकिन इसका वो मिस्ताक बनता है कि जो कि उसने कोटेशन दी थी कि चांस फेवर हो, तो ये नॉट गिवन है, कोई डिस्कवरी नहीं की थी तो फादर। सर
Tell about the six. How it is true? ये वाला Yes, sir. 6-1. Perking hoped to manufacture drugs from coal tar burn waste product. Hoped in this one. Where is that written? Hoped or any synonym of it? He was willing. yes exactly. Let me tell you. ये देखिए, Mhm. read from here. जी पता लगा? ठीक है. ठीक है. And readily available to coal tar product. ठीक है. True हो गया. Yes, sir. I got it. जी, no more than two words. Before Perkins' discovery, with what group in society was color purple associated? ये जामनी रंग कौन सा ग्रुप इस्तेमाल करता था इसकी डिस्कवरी से पहले? Only the rich. जी, द रिच इसका आंसर है. द रिच, THE द रिच लिख लें अपने पास. What Sir, potential? जी, sir, tell me one thing. If we just only write rich, then it will be wrong or right? रिच का मतलब है कि कोई बंदा, कोई अमीर. द Yes, yes, yeah, you have told this. Okay. Yeah, रिच लिख. it is about the community, the rich इसका community. हाँ, सारी जो आती है. सारी सिर्फ अमीर लोग थे ना, वो करते थे द Good. रिच करेंगे हम. Okay, sir. Got it. और what potential did Perkin immediately understand that his new dyes had? इस क्वेश्चन को पढ़ें जरा दोबारा. What potential did Perkin, क्या पोटेंशियल देखा परकिन ने कि इसका जो नया डाई है वो क्या कर सकता है? ठीक है. सो देयर इज, यहाँ पे इसका आंसर है. जस्ट रीड एंड टेल मी. Yes, Color fabric तो नहीं होगा. Ali Hassan, just read this box and tell me what is the answer. Commercial possibilities. Exactly true. So the answer Color is fabric में नहीं है. yes. Number 9 answer is commercial possibilities. Write down commercial possibilities. Two word answer, right? So commercial one word, possibilities second word. What was the name finally used to refer to the first, finally, just read this. Finally used to refer to the first color Perkin invented. This one. Mauve. Mauve. Exactly. First it was called Tyrian purple, but finally it was settled on mauve. Uh, Exactly. What was the name of the person Perkin consulted before setting up his own dye work? Was it France? Louis. What was the name? Louis, I think Louis. No, 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 no. There was a French dyer. August. Uh, No, 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 no. a French one. I think his name was, I forgot all his name, but I remember. Here. Mm, Robert Puller. G. Robert Fuller.
क्योंकि उसी से उसने कंसल्टेड ईमेल्स को एडवाइस के बारे में कह रहा है ना, तो उसी से कंसल्ट किया था। अब हम किसी से एडवाइस लेनी हो तो तभी कंसल्ट करते हैं ना। जी जी बिल्कुल ऐसे यार, ये सीधा सीधा इतना मुश्किल नहीं होती रीडिंग, ये आसान ही होती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ पर्सन। अच्छा जी, उसके बाद इन व्हाट कंट्री डिड परकिंस न्यूली इन्वेंटेड कलर फर्स्ट बिकेम फैशनेबल। किस मुल्क में सबसे पहले वो फैशनेबल हो गया था। फर्स्ट बिकेम। ओके सर, ओके। इसमें पढ़े। उसी में। फ्रांस। जी। According to passage, which disease is now आई being थिंक फ्रांस। targeted by researchers using synthetic dye? जी, which disease? मलेरिया। जी। कॉलेरा। कॉलेरा मे बी। Oh, this one. सर मलेरिया। मलेरिया मलेरिया मलेरिया। द लास्ट है वो, तो वो तीन दी हुई है उसने बस। उसने either कहा Michigan वो and in what माइक्रो would have been वो particularly वैक्सीनेशन, pleasing to work in that current use. माइक्रोब्स की बात हो रही है वहां पे, वो डिफरेंट डिस्कशन। Now just see the answers. Now read the answers and check your answer. ठीक है जी। ठीक है सर। यस। समझ आया हाउ टू अटेम्प्ट इट। Sir, but come towards a customer aid. It is written on the back of the ICE books that the brackets are optional. So it is written there the only rich. So it is optional. We या can तो also दारिज कर दें या we can just only write तो आप rich, या तो दारिज करें या ओनली रिच कर दें, दोनों में से कोई भी सही है। but it is written on the back of the IS books that the brackets are optional. एक्चुअली जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना, वो द रिच बन रही है। वैसे वो ऑप्शनल है, आई डू अंडरस्टैंड। जिस तरह कमर्शियल पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज दे दें तो ठीक है। माउ माउ वॉज या माउ इज लिखना जरूरी नहीं है, माउ काफी है। लेकिन अगर हम इसको माउ इज करते हैं, वॉज करते हैं, तो आप पूरा जुमले में देखेंगे कि वो एक सीधा सेंस बनाता है बेसिकली। एनीवेज विदाउट दिस देखें तब भी Mhm. ठीक है। You mean to say we can only write rich? हाँ जी, यू कैन ओनली राइट रिच।
ठीक हो गया जी, आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।